Good morning, everyone. We'll start with the morning out okay, with the technical and derivatives outlook. So we start with the Nifty outlook. The Nifty has registered at close of 17,539. So previously during the last week, there was a 4-week trading session. Initially in the start of the week on the Monday, the Nifty saw some downward momentum, and it saw a the low at 17,166, and the very next day the Nifty gained the momentum, and it made a high of 17,700. So basically the 17,100 and 17,700, this was the range for the previous week, and both the levels are the extreme ends for the very particular basically the last week was only a 4 trading session, and within this 4 trading session we saw this wild momentum. So with this both sides, 17,100 and 17,700, these are the immediate levels to watch for. So whenever the lower side, if 17,100 is broken, there will be some amount of weakness will come into this index, and probably we might come close to 17,000, or we might break 17,000 during the week. So the view is little bit cautious. We are more cautious because we are looking at the FI's data, which they have been selling for the last couple of days continuously. They are selling in the index futures, and they are overall 81% short in the index futures. So FIs are not very positive on the market. Plus, we compare the derivatives data. Again, the supports, the put writing, which was happening all the way at 17,000 level, has now shifted to 16,500 level. So there is a slight shift in derivatives data from 17,000 to 16,500, which also suggests some of the cautious view. So basically, we believe that there will be slight selling pressure in the market. So there is a possibility of index coming close to 17,000. We will review. Overall, we are not having any largely we are not having any negative view. But then maybe for the week or so, there can be the continuation of the range bound movement can be seen. And whenever the index comes close to 17,000, even if it breaks 17,000, close to 16,800, that is the area where we can again look for the buying opportunity. Overall, the buyers is very strongly bullish. So any such decline should be you to go long in the market. So as we keep on saying, like banking and auto are the sectors which are the possible counters where we can always look for the buying opportunities. Specifically from the derivatives point of view, on Friday, the shorts were added in the Nifty future, but in Bank Nifty, there were a little bit of long positions were added. So that again stands to be mixed kind of view with the range with more of a like sideways to range amount of momentum to be seen. We are not initiating any trades for the day. Maybe whenever we have very clear thoughts, we will be activating during the live market. So range bound market, so some maybe intraweek corrections might be seen, but that remains a buying opportunity. This is the view for the market. That's all from technical. Over to Vishal sir for more updates. Yeah, good morning, sir. So to start off with our monthly note on strategic capital market, wherein what we have seen is in the month of August, Indian equity market, they has outperformed the global peers, wherein Indian equity market was up by 4 percentage point on month-on-month basis. And vis-a-vis like globally, we are seeing a weakness anywhere between 4 percentage plus decline, but we have seen across other markets. Now, Indian outperformance is primarily led by weakness in commodities, and overall India being a commodity consumers, and they have benefited, and FIs were net buyers in the month to the tune of around 54,000 crore. Macro side, if you look at high frequency indicator, whether you talk about GST, power demand, PMI, they continue to remain strong, and moderation is seen in CPI inflation. Which was down to around 6.7 percentage point, which was around 7% in the previous month. DI selling, what we understand is more of a profit booking in the current month, because if you look at the flows point of view, DI's flows in terms of SIP flows continue to remain strong.
though we await the current month data, but till July it was anywhere between positive 12,000 odd crore. Coming to overall view on an equity market, I mean, after the Q1 numbers, the consensus has cut the EPS by around 5 percentage point, and now this is primarily led by weaker than expected result in oil and gas. However, there has been a positive set of results. If you look at sector-wise banking and even construction name, the numbers were not that bad. Even from the likes of FMCG also. NIFTY valuation after this up move, it has moved to slightly on a premium side. And overall, our recommendation is topics sector-wise is ICICI Bank, M&M, Jubilant Food, Astral, Bata, Manappuram, Genser, Rights, PSP, and SGS Enterprise. Overall, I think what we are seeing is, the valuation wise, wherever there is a valuation comfort, which is a low price to earning stocks, will benefit or probably will give continue to give a outperformance, as growth stocks will see an impact primarily led by the expectation of further uptick in the inflation, or further uptick in the interest rates by the regulators, whether in India or across the globe. Next is update is on Tata Steel. So Tata Steel planned to hive off its new material business into a separate subsidiary, and it's planning to foray into manufacturing of railway coaches, medical devices, and graphene application. The initiative is to insulate the vulnerability of the revenue from the cycles of steel business. Overall, I think if you look at it, is a positive development, and railways within the construction space, after road construction, railway has been a major beneficiary of the government rollout of capex program. On the stock, on the Tata Steel, we have a buy rating, the target price 112. Next is on IHCL. So company continue to remain signing off property, and wherein they have signed a new Ginger Hotel in Gangtok, Sikkim. It is strategically located and the top of the hill, and probably will give a pretty picturesque view. And this is a brownfield project, and it's a partnership with two or other partners, and this hotel will open anywhere time in 2023. Currently, if you look at, we have a hold rating on IHCL, the target price of 302. Next is on, as per media report, TCS has received its anniversary appraisal policy for all its new joinee. And during FY22, company added around 1 lakh odd employee, which is around 17% of its total employee count. The postponement of appraisal, which was one of the concern in IT space, looks to be, the postponement of appraisal looks to be handsome amount. Though I think in a short term, this is a negative development, but considering the impact on the employee morale will be there, and that way, on a short term, it definitely have an impact. So from a rating point of view, I think within the space, IT space, we prefer Gensar, wherein there is a valuation comfort. Next is on Wipro has announced a partnership with Cisco to develop the hybrid cloud solution for its client. This will enable Wipro to reduce cloud implementation time and enhance its overall user experience. IT services revenue forms around 90% plus to its total revenue, and which will add to this current addition of Cisco. In terms of our recommendation, we have a hold rating with a target price of 405. Last thing from my side is on upcoming IPO, which is Tamil Nadu Mercantile Bank. It is opening up today, and subscription is open from September 5 to 7, wherein company is planning to raise around 832 odd crore, and at a price of 500 and 525, that's a price band. In terms of Anchor book, they have already raised around 363 odd crore, and if you look at Anchor book is subscribed by Max Life, Bajaj Life, Kotak Life. Overall, if you look at from a tilt point of view, insurance companies they have bought, probably that says that mutual fund side there has been a buying, but insurance company they are more buyer, which says that probably it's a stable set of business, and as an investor one should hold in and hold it for a little longer period of time. In terms of other positives, that what we see is asset qualities. They have reached a stage wherein from now on it is regarded to be stable and benign, and overall cost to deposit ratio is relatively higher for this company, but net interest margin is quite healthy. And in terms of their ROA,
company will see an ROA of 1.5 percentage point in the coming years, with a stable NIM of around 1.4 percentage point. If you look at valuation point, then Tamil Nadu Mercantile Bank is being offered at a price to book of 1.35 times FY22 book value. If we look at vis-a-vis peers, it is offered at a discount. So I think one can subscribe to it with the view to hold and to benefit over a long period of at least mid period of time, to benefit overall the company trajectory of moving its ROA and NIMs going ahead. Yeah, that's all from my side. Over to you, Sarma. Thank you, Vishal. Good morning, team. Railways freight revenue was higher by 19% in August. Railways earn about 66,658 crores in FY23. Coal freight revenue rose 42%. This is despite flood during August also. But very important is Concor will be a major beneficiary. Even Railways has completed electrification of Chennai-Mumbai Railway. It is a double line. And this will increase the time, it will reduce the time of travel, increase the efficiency. So it is very positive. Even RVNL has got few orders. So railway stocks, IRCON, Rail, RVNL, all these things have started to perform, and these were very good dividend paying stock. Lodha Group has said in a notification that it has repaid offshore bonds worth $55 million. That is 438 crores in full, 6 months in advance. So it was likely to mature in March 2023. So they have paid it now before the redemption. Mahindra Finance, August 22 disbursement was 3,740 crores, higher by 75% year-on-year basis, and approximately 17,150 crores they have disbursed year till date, which is 104% higher. Collection efficiency is 96%. Previously it was 97%. It has dropped by 1%. Hindustan Aeronautics and L&T will build a 5 PSLV rocket. So this is something very different. The order for the rocket is 860 crores. The deal is from NISTY. It is a part of ISRO. So the project delivery time is expected in 2 years. And in this, the joint venture is HAL will hold 52%, L&T will hold 48%. So HAL, even DEL, there was one news that it has signed a MOU with Smith Detection India to manufacture high energy scanning system in India. So defense stocks are on the run. We have been recommending defense stock for a very long time. Still, we feel Cochin Shipyard, Musgon Dock, there is still enough value. So any correction should be an opportunity to buy in these two stocks. We got the trade data. Merchant export in August, not a great number, because month on month it degrew by 9%. It is $33 billion. Year till date it is $164 billion. Import also was slightly lower by 6.9 month on month. Year on year basis, yes, there is a big jump there. It is at $61.7 billion. Trade deficit at 28.7 billion. So trade deficit is something which should worry everyone. So this is something to watch for. NTPC has registered 62% growth in coal production from captive mines in August 22. So this is very good. Regularly they are scaling up. So NTPC should be a stock to watch. So in August, 7.36 million metric ton they have done versus 4.55 million metric ton. Adani Enterprises will replace Shree Cement in NIFTY on 30th September, this month end. And the flows would be approximately 3,070 crores. Due to ETF flows or passive funds flows. This is one stock to watch out for somebody who is interested in short term. Petronet LNG in their AGM has said it will invest 40,000 crores in the next 5 years for expanding import infrastructure
and to get into few chemical also. And they want their profit bottom line to be 10,000 crores in next 5 years. That is something very important. So Petronet LNG, IGL for a long-term investors looks good. Mahindra Lifespace now aims to make 2.5 times fold jump in housing sales in next 3 years. Current the 2,500 crores. Currently they are doing 1,028 crores. So Mr. Arvind Subramaniam, CEO MD, he is very bullish on the prospect. They have few housing project in Jaipur and Chennai. Chalet Hotel execute license agreement with Delhi International Airport. Hotel stocks are doing very good. Indian Hotel, Mahindra Holiday, Lemon Tree, Chalet. I think Mahindra Holiday and Indian Hotel still, the up move is still pending. NMDC came with a very interesting report where Deepam said that the iron ore steel plant will start functioning this month, and by March, the sale process will be tendered. There was IMF paper, which talked about few things. So Gadi Shakti will ramp up logistic efficiency. That is what IMF paper is saying. And India is 127th country among 126 country in terms of road speed. The way the goods travel by road, we are at 127. The fastest is US. In US it travels around 107 kilometer per hour. This is the average speed. Now in India it is 58 kilometer per hour, but previously it was only 28. But after GST, things have started to improve. It is 58 kilometer per hour. But our logistic cost is 13.14% of the GDP, whereas other countries are lower. This is where India needs to do. That is where Prime Minister has introduced this Gadi Shakti scheme, where the efficiency will be improved between all departments. India aircraft carrier INS Vikrant which costed around 20,000 crores, 45,000 of tons, and where the project was started in previous NDA government in 1999, and the mapping was done in 2003. The kneel was laid in 2009. Almost 25 years it has taken for the process to continue. But Cochin Shipyard said if they get a new order, better, heavier one, they can make it in next 7 years. So they have learned the trick, and only 6 countries know to manufacture aircraft carrier. India is one among them. It is a huge, remarkable thing. That is why I am very bullish on Cochin Shipyard. Everybody expected that Prime Minister will announce, but knowing this government well, they will take their own sweet time, but the order will come. We need one more aircraft carrier, and this is going to be positive. GAIL has emerged as the highest bidder for JBF Petrochemical with almost 1,800 crore resolution plans for bankrupt companies. The source is ET now. So India has become 5th largest economy with $3.5 trillion. Now we have crossed Britain. No, and our per capita income also has increased to $2,500, whereas UK, they have a very less population. They have a per capita income of $47,000. So not comparable, but anyway, we have become the 5th largest economy. With that, over to you, Hitendra. Yeah, thank you, sir. Good morning, everyone. हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. कल हमने देखा कि हमने जैसे मंथली स्ट्रैटेजिक कैपिटल मार्केट की रिपोर्ट रिलीज की है, उसमें देखा कि इंडियन इक्विटीज ने अगर हम ग्लोबल पीएस से देखें तो आउट परफॉर्म किया 4% मंथ ऑन मंथ में. बाकी हम अगर ग्लोबल देखेंगे तो वीकनेस हमें दिखी गई. इंडियन की आउट परफॉर्मेंस का मेन रीजन है कि जो कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ी वीकनेस है, जैसे क्रूड हो गया, स्टील हो गया, उनके अंदर एफआई ने भी थोड़ा इस बार देखे जाए तो उनके फिगर्स पॉजिटिव थे 54,000 करोड़ के आसपास. और मैक्रो जो इंडिकेटर देखे जाए हाई फ्रिक्वेंसी है, जैसे पावर हो गया, पीएमआई हो गया, जीएसटी कलेक्शन, ये भी सब अच्छे दिखा रहे थे. तो इसके चलते भी हमें थोड़ा डाउनफॉल देखा गया.
इन्फ्लेशन में भी देखेंगे, थोड़ी सी इन्फ्लेशन में हमें डाउनटेक दिखेगी 7% से 6.9 के आसपास का। डीआई ने बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग की गई है, बट एसआईबीज जो थे वो रिमेन स्ट्रॉन्ग देखे गए, और ओवरऑल जुलाई मंथ उनके लिए भी पॉजिटिव था 12,000 करोड़ के आसपास का। हमने हमारी ईपीएस को थोड़ा सा रिवाइज करके कट किया है 5% से, क्योंकि हमें थोड़ा वीकनेस लग रहा है ऑयल एंड गैस सेक्टर में। सेकेंडली हमें बैंकिंग स्पेस थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, कंस्ट्रक्शन स्पेस पॉजिटिव है, एफएमसीजी में जो सिलेक्ट स्पेसेस है पॉजिटिव है। निफ्टी में जो वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो निफ्टी थोड़ा सा अभी प्रीमियम पे आ गया है वैल्यूएशन वाइज, पहले जो था। और उसके अंदर अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखे जाए तो आईसीआईसीआई बैंक अच्छा है, एमएनएम अच्छा है, जुबलेंट फूड अच्छा है, एस्ट्रल अच्छा है, बाटा इंडिया अच्छा है, पीएसपी है, एसजेएस एंटरप्राइज जहाँ पे हमें थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट मिलता है और लोअर पीई पे है। और अगर हमें और अभी यहाँ से लगता है कि थोड़ा जो इंटरेस्ट रेट से यहाँ से फर्दर और आगे अपटेक दिख सकती है। सेकेंड, ये भी जो कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ पे आ जाए तो टाटा स्टील ने उनकी जो एक हाइव ऑफ कर दिया प्रोजेक्ट, और वो अभी रेलवेज के सेक्टर में भी आ रहे हैं और भी न्यू लाइन इस पर डेवलप करेंगे स्टील बिजनेस के बाद। और सेकेंडली रोड और इंफ्रा रोड के बाद रेलवेज के ऊपर सेकंड खर्चा गवर्नमेंट करती है। आईएचसीएल ने भी एक नया जंजर होटल साइन किया है गैंगटॉक में, सेकंड में रहेगा, ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट रहेगा। 2023 तक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये होटल की स्टार्ट हो जाएगी, और करंटली इसकी हमारी होल्ड रेटिंग है 302 प्राइस के साथ। टीसीएस ने कहा है कि जो न्यू ज्वाइनिंग्स के लिए एनवर से अप्रेजल कर दी थी उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया, तो 1.72 लाख जो टीसीएस के एम्प्लॉयज है इनके लिए रहेगा। सो थोड़ा एम्प्लॉय मॉडल के हिसाब से थोड़ा ये सैडनिंग रह सकता है, बट स्पेस में हम देखा जाए तो वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से सेंसर अच्छा लगता है। विप्रो को भी सिस्को से एक ऑर्डर मिला हाइब्रिड क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस को वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। करंटली इसके ऊपर भी हमारी होल्ड रेटिंग है। अभी एक नया आईपीओ आज से स्टार्ट हो रहा है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का, 5 से 7 सितंबर के आसपास का टोटल ये टाइम स्पैन है। 832 करोड़ की टोटल कॉस्ट है, मतलब ये बुक साइज रहेगी इसकी। 500 से 525 का एंट्री प्राइस रहेगा जो बुक बिल्डिंग है, और एंकर बुक में 363 करोड़ का टोटल उन्होंने बेट किया है। बेसिकली इसमें देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनीज इसके अंदर हाईएस्ट है, मैक्स फाइनेंशियल हो गई, बजाज हो गई, कोटक हो गई, म्यूचुअल फंड ने भी डाला है, पर उनके सामने देखा जाए इंश्योरेंस फेस का है। और ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर किसी इन्वेस्टर को अगर इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं। एसेट क्वालिटी देखी जाए तो स्टेबल दिख रही है, कॉस्ट टू डिपॉजिट रेशियो भी अच्छा है, हाई है इनकी, और जो निम्स है वो भी अच्छे हैं। रिटर्न ऑन एसेट 1.5% के आसपास का है, और स्टेबल निम के साथ वैल्यूएशन देखा जाए तो प्राइस टू बुक है वो 1.35x है। अगर हम पीयर के सामने देखा जाए तो डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। तो अगर कोई भी लंबा या मीडियम टर्म का निवेशक रहेगा तो उसे वो इसके अंदर निवेश कर सकता है और अप्लाई कर सकता है FY22 के लिए। रेलवेज की भी अगर हम देखें तो उनकी जो फ्रेट है वो 19% से ग्रो हुई है 66,000 करोड़ के आसपास की। कोल में देखा जाए तो 42% का जंप देखा गया, फ्लड्स के चलते ये हमें जंप देखा गया तो अच्छा है। इसमें जो नया बेनिफिशियरी रहेगा वो कौन रहेगा, क्योंकि इन्होंने जो इनकी जो इलेक्ट्रिक होगी ये लाइन जो चेन्नई मुंबई की रेलवे, तो इससे टाइम भी रिड्यूस होगा और एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। सो रेलवे स्टॉक्स पे फोकस रहना चाहिए, जैसे आरबीएनएल हो गया, एरकॉन हो गया, आरएनएल हो गया। लोड़ा ने भी कहा है कि वे रीपे करना चाहेंगे $55 मिलियन, वो 6 मंथ्स एडवांस में रीपे कर रहे हैं, मार्च 23 की इनकी डेडलाइन थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल ने कहा है कि जो इनके डिसबर्समेंट है वो इस बार 3740 करोड़ है, 75% हायर ईयर, और 17,150 टोटल डिसबर्समेंट है। अगर देखा जाए तो 104% हायर ईयर टिल डेट के लिए। कलेक्शन एफिशिएंसी देखा जाए तो 1% से ड्रॉप हुई है, जो कि 96% है। HAL एंड LNT दोनों मिलके एक PSLV जो 5 PSLV रॉकेट्स बनाने वाले हैं। NIS ने इन्हें ऑर्डर दिया 860 करोड़ का रहेगा, इसमें ये जीवी रहेगी इनकी, और ये अगले 2 साल में इन्हें देना है एसरो को बेसिकली। और इस HAL के अंदर 52% की होल्डिंग रहेगी, और LNT की 48% की। BEL ने भी MOU साइन किया स्मिथ के साथ, बेसिकली हाई एनर्जी स्कैन्स डेवलप करना चाहते हैं। और हम अगर इसमें देखें डिफेंस स्पेस में तो कोचिन और मजगांव डॉक भी वैल्यूएशन वाइज और अच्छे लग रहे हैं। और अभी हम जैसे देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने INS विक्रांत को जैसे कमेंट्स किया था, ये सबसे पहले प्रोजेक्ट इंडिया गवर्नमेंट में स्टार्ट की थी 1999 में, 2003-2009 से लेकर टोटल इसको देखा जाए 25 साल लग गए इस शिप को डेवलप करने के लिए। और देखा जाए तो सिर्फ ओनली 7 कंट्रीज है जो इसे डेवलप अभी तक कर पाई है इंडिजिनियसली। और अगर अभी कोचिन शिपयार्ड ने वो एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, और वे कहते हैं कि अगर उन्हें सेम इससे और अच्छा कैरियर बनाना है तो वो अगले 7 साल में बना सकते हैं। सो कोचिन शिपयार्ड और मजगांव डॉक्स जैसे स्टॉक्स हमें फोकस रखना चाहिए, और हमें अभी भी हम इसके ऊपर बहुत बुलिश है, और वैल्यूएशन इनकी और अभी भी अट्रैक्टिव है ऐसे लेवल से भी। एनटीपीसी ने कहा कि उनका जो कोल प्रोडक्शन है वो 62% से ग्रो हुआ, कैप्टिव माइंस को भी उन्होंने थोड़ा यूज किया है, 7.36 मेट्रिक टन से इंक्रीज अभी पहुंचा है 4.55 से।
अडानी एंटरप्राइजेस रिप्लेस करेगा श्री सीमेंट को निफ्टी 50 में, तो उसके चलते फंड्स में 3070 करोड़ का टोटल जो ईटीएफ फंड है उसके अंदर हमें पैसिव फंड्स का आउटफ्लो इनफ्लो दिख सकता है। सो इन दोनों स्टॉक्स में मूवमेंट रह सकती है। पेट्रोल एंड एलएनजी के एजीएम ने कहा कि वे अगले 5 साल में 40,000 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहेंगे और वे केमिकल बिजनेस में भी थोड़ा और फोकस करना चाहेंगे और वे अपनी जो पैट है उसे 10,000 करोड़ तक ले जाना चाहेंगे अगले 5 साल तक। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस ने कहा कि इनकी जो हाउसिंग सेल्स है वो 2.5 से जंप कर गई है, 1028 करोड़ के आसपास का टोटल सेल्स है। बेसिकली जयपुर और चेन्नई जैसे जोन से उनका बेसिक फोकस रहेगा। एनएमडीसी की एक रिपोर्ट टीपीएम ने रिलीज की कि स्टील प्लांट है वो स्टार्ट हो रही है और जो उनकी जो सेल उससे से वो फिनिश करना चाहेंगे मार्च 23 तक। गति शक्ति जो है वो उसे रैंप अप करना चाहते हैं। बेसिकली जो रोड कनेक्टिविटी है और जो फ्लीट है उसे वे इंक्रीज करना चाहते हैं। करेंटली देखा जाए तो यूएस के सबसे फास्टेस्ट 107 किलोमीटर पर आवर के सबसे फ्लीट ट्रैवल होता है और इंडिया की अगर देखा जाए तो पहले 28 किलोमीटर पर आवर थी, अभी उसे 58 कर दी गई है। बट हम लॉजिस्टिक को कॉस्ट रेशियो देखा जाए तो इंडिया के 13% जो जीडीपी वो लॉजिस्टिक्स में जाता है। सो ये हाई ऐसे हमें नीचे लाना पड़ेगा इस फिगर को। गेल ने कहा है कि वो उन्होंने जेबीएफ पेट्रोकेमिकल को जो रेजोल्यूशन ऑफ बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन से उन्होंने बाय किया है और इंडिया की भी देखा जाए तो इंडिया भी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, पर हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो $2,500 के आसपास की है। और जबकि ब्रिटेन की देखा जाए जो कि करंटली जो 5th थी वो उनकी 47,000 पर कैपिटा इनकम है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। थैंक यू एवरीवन फॉर टेकिंग द मॉर्निंग कॉल। यू मे नॉट डिस्कनेक्ट।